एंड नाउ टू द पॉइंट। चलो मेरी तरफ बेटा ध्यान दो सब लोग। कहीं ना कहीं बेटा दिमाग जो है वो सोचता तो है बड़ा कि चलो सर आपने हम लोग को इतना ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ाया, इतना आपने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छा लगा, थोड़ा समझा भी हम लोग को, ऐसा नहीं है। बट सर हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग द ज्योमेट्रिक मीन। What is the use of studying the geometric mean? So there are different uses of studying a geometric mean. There are different uses of studying a geometric mean. और वही uses मैं वन बाय वन तुम्हें एक्सप्लेन करते रहूंगा, है ना। लिखना मत, बाद में मैं तुम लोग को डिक्टेट करूंगा तब लिखना, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज कि geometric mean is used, geometric mean is used for calculating the average rate of interest. Geometric mean is used for calculating the average rate of interest, especially a compound interest. Especially a compound interest. In school days, we have studied that interest, they are of two types. Number one, simple interest. Number two, compound interest. So out of this geometric mean is used for calculating the compound interest. For calculating the compound interest. What is compound interest? Compound interest means the interest which is calculated on a principal plus the interest which is been obtained on the last year is called to be as a compound interest. इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड, ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड फॉर calculating the average rate of interest which is called to be as a compound interest. Apart from that, geometric mean is used for finding the rate of change in a population. So everyone knows that a population of a town or a population of a state or a population of a country continuously it keeps on changing with respect to the passage of time. So that rate of change in a population, it is being calculated with the help of geometric mean. Next point is since geometric mean is considered to be as a good average, ये अभी अभी हम लोग का डिस्कशन हुआ था। geometric mean is considered to be as a good average. It is considered to be as the good average, and since it is considered to be as a good average, therefore this geometric mean is used in the construction of index numbers. Geometric mean is used in the construction of index numbers. But math students, they might be aware of this chapter, but index numbers 11th स्टैंडर्ड में बड़ा तुम लोग ने मैथ्स 2 में इंडेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था बड़ा सब लोग ने। किसी को भी अगर थोड़ा बहुत बड़ा याद हो तो थोड़ा बहुत मैथ्स 2 में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बड़ा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड which was being based upon price index number, quantity index number, value index number, या तो फिर वहां पे बड़ा डिफरेंट फॉर्मूलाज थे जैसे कि लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर, परचेज इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश बाउलिस इंडेक्स नंबर। किसी को याद आ रहा है बड़ा? एनीवन मैथ स्टूडेंट्स? मानव, उत्कर्षा, कुंजन, एनीवन बड़ा?
थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो क्लिक हो जाएगा बेटा वहाँ पे। फिशर्स फॉर्मूला, यू हैव स्टडीड फिशर्स। अच्छा, किसी को भी याद नहीं है बेटा? अच्छा, याद है तुम लोग को? ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। और इन केस बेटा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है बेटा, है ना, इन केस अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो बेटा, स्पेशली बेटा नॉन मैथ स्टूडेंट्स बेटा, तो वो बेटा बिल्कुल भी अफसोस जाहिर न करे, क्योंकि तुम्हें बेटा ये सेम टॉपिक सीए फाउंडेशन में बेटा पढ़ना है। इन सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स बेटा यू आर गोइंग टू स्टडी द सेम चैप्टर बेटा। जो भला इंसान बेटा जो तुम्हें अभी फिलहाल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा रहा है बेटा, वही भला इंसान तुम्हें बेटा इंडेक्स नंबर्स भी पढ़ाएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, आफ्टर नोइंग दिस पार्ट बेटा, ये पॉइंट कंप्लीट होने के बाद, चलो चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा कि दिस ज्योमेट्रिक मीन is considered to be as appropriate average. This geometric mean is considered to be as the appropriate average for all those values which are to be found in GP, which are to be found to be in GP. अब यहाँ पे बड़ा हम लोग ने जीपी बोला, जीपी, तो बड़ा दैट जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बड़ो। अच्छा, तुम लोग को बेटा 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ा था, याद है बेटा? यू हैव स्टडीड द चैप्टर बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जिसको बेटा हम लोग शॉर्ट में बेटा एपी बोलते थे, एपी। तो ये, हाँ, तो ये सेकंड टर्म है बेटा, ये उसी का भाई है जिसका नाम है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा? The terms, but they are said to be in a geometric progression, but when the ratio, ratio bola ratio between but any term to the previous term, if it is found to be as constant, when the ratio between any term to the previous term, if it is found to be as a constant, then the terms they are been said to be in GP. Then the terms they are said to be in GP. So देखो, only for your explanation only for your knowledge मैं बता रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे। Suppose if the given terms are T1, T2, T3, dot Tn, T1, T2, T3, dot Tn, then if the ratio of T2 upon T1, T3 upon T2, similarly T4 upon T3, if it is found to be as constant, and they will be always equal. So in that case, the terms they are said to be in GP.
and that ratio which we get constant, it is been denoted by using R. R is called to be as a common ratio. R is called to be as a common ratio. This all things what I am explaining, especially for the non-मैथ स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स ने 11th स्टैंडर्ड में जीबी के बारे में पढ़ा था. In 11th standard you have studied about this geometric progression, I know that. And बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल भी अफसोस जाहिर न करे, क्योंकि इन सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स you are going to study about this chapter which is called to be as sequence and series. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया तुम लोग को? In CA foundation you are going to study about this chapter which is called to be as sequence and series. चलो, the last point is whenever the number of observations are more, whenever the number of observations are more and we want to assign less weights, so it can be done with the help of geometric mean. Number of observations are more, but we want to assign the small weights, so it can be done by using the geometric mean. And vice versa, when the number of observations are small and we want to assign the more weights, so it can be done by using a geometric mean. So these are the multiple means these are the different uses of studying a geometric mean. ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने सिर्फ खाली फॉर्मूला से ही पढ़ा के ज्योमेट्रिक मीन खत्म कर दिया है. बाकी हम लोग को बताया भी नहीं कि व्हाट कैन बी द यूज ऑफ स्टडिंग ज्योमेट्रिक मीन. तो ये सारे यूजेस मैंने बता दिए. एंड नाउ आई विल रिपीट ऑल दिस थिंग्स. तुम लोग फटाफट लिखना, जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज टाइप करते हो ऐसे फटाफट लिखना है, दम दबा दबा. चलो, राइट ऑन विद द वेरी फर्स्ट राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट कि geometric mean is used geometric mean is used for calculating is used for calculating is used for calculating the average rate of interest is used for calculating the average rate of interest, especially especially compound especially compound interest. Same point, but you continue further. Same point. Geometric mean is used geometric mean is used for calculating the rate of change, for calculating the rate of change in a population, for calculating the rate of change in a population. Next point, point number two. Point number two. Since
geometric mean since geometric mean is considered to be as a good average since a geometric mean is considered to be as a good average. Therefore, therefore it is used. Therefore, it is used for the construction of it is used for the construction of index numbers. It is used for the construction of index numbers. Next point, point number three. Geometric mean is considered geometric mean is considered to be as the appropriate average. Geometric mean is considered to be as the appropriate average for all those values for all those values which are in which are in now you should write in capital letters which are in GP, which are in GP. But a GP, it stands for geometric progression. And I've already explained what is a geometric progression is, right? Next point. Next point is whenever the number of observations are large, whenever the number of observations are large, and we want to assign the small weights whenever the number of observations are large and when we want to assign the small weights, so it can be done by using a geometric mean. It can be done by using geometric mean. And vice versa. When the number of observations are small, when the number of observations are small and we want to assign the large weights, so it can be done by using geometric mean. So these are the uses of studying the geometric mean. And by this the geometric mean it gets over. चलो तुम लोग को कोई डाउट है तो मुझे पूछो प्लीज. एक बार गो थ्रू कर लो पूरा ज्योमेट्रिक मीन. कोई डाउट है तो मुझे पूछो.
चलो फटाफट पढ़ा देख लो, गो थ्रू करो, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। चल चेक कर, फटाफट चेक कर, फटाफट चेक कर, फटाफट चेक कर। साबियो, चल मुझे डाउट पूछ। चलो जल्दी जल्दी बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। नहीं बेटा, लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करेंगे, और ना ही हमें लॉग टेबल अपना खुद का ले जाना है बेटा। वैल्यूज जो है लॉग एंटी लॉग की बेटा, वो क्वेश्चन में ही दिए होंगे बेटा। बस वही वैल्यूज को बेटा यूज करके तुम्हें सम सॉल्व करना है। चलो, और कुछ? और कोई डाउट्स? चल आंसर माय फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। Geometric mean is used for calculating a dash interest. अभी तुम लोग बेटा टाइम वैल्यू मनी पढ़ रहे हो ना सब लोग, तो ऑलरेडी तुम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया है ना सब लोग ने बेटा। तो तुम लोग को तो पता था सब ये फिर, है ना बेटा। The rate of change in the population madam, it can be calculated by using dash. मुझे बताओ, ज्योमेट्रिक मीन is used in the construction of dash.
Dash is used in the construction of index numbers. Geometric mean is considered to be as the appropriate average for all those values which are in. Next, when the number of observations are large and we want to assign the small weights, it can be done by using. It can be done by using geometric mean. Very good. Cholo, very good. Right of the next heading to be a student. Harmonic mean. Right on the next heading to be a student. Harmonic mean. The name of the second major average, which is called to be as harmonic mean. And in that case, write down a raw data. Write down a raw data. Raw data. Raw data. And start the formula to be as harmonic mean is equal to harmonic mean is equal to n upon 1 by x1 plus 1 by x2 plus dot 1 by xn, where small n it represents the number of observations. Small n it represents the number of observations. Number of observations.
The same formula can also be written as harmonic mean is equal to n upon summation of 1 by x n upon summation of 1 by x. The formula is considered to be as one or the same. चलो नोट कर लिया बड़ा सब लोग ने. We'll be using बड़ा first formula, but learn करने के टाइम दोनों formulas learn करने बड़ा सब लोग को. And now we'll stop here, and I will ask some questions based upon the geometric mean. मुझे बताओ कि under what condition we cannot make the use of geometric mean. फटाफट आंसर दो. Under what condition we cannot make the use of geometric mean. चलो बताओ. Anyone? नहीं बड़ा ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कब यूज नहीं कर सकते. इट इज रॉन्ग. ये आंसर नहीं है. एक जन ने आंसर बोला तो सब लोग कॉपी करके ये बोल डालते सब. I am asking under what situation we cannot make the use of geometric mean. Answer to that question is when the values are negative. So for the negative values we cannot make the use of geometric mean. नोट कर लो बड़ा सब लोग. When the values are negative, so for the negative values we cannot make the use of geometric mean. And with the reason because the formula is under the root. रूट के अंदर अगर बड़ा नेगेटिव नंबर्स आ गया तो इट विल गिव द राइज टू इमेजिनरी नंबर. Tell me one practical situation where we cannot make the use of geometric mean. ऐसा एग्जांपल दो मुझे जहाँ पे ये geometric mean यूज नहीं हो सकता है.
हाँ बट ये क्या है सेवियो, व्हाट इज दिस? शिवम, साइज कभी बड़ा नेगेटिव होता है? यस, टेम्परेचर, वेरी गुड। साइज बड़ा कभी नेगेटिव, टेम्परेचर इज वन ऑफ द एग्जांपल। अक्षिता, फाइनेंस में कहाँ पे यूज होता है? द बेस्ट एग्जांपल इज बड़ा कि तुम लोग बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों नहीं बड़ा? तो व्हाइल कैलकुलेटिंग बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस वी कैन नॉट मेक द यूज ऑफ बड़ा ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि वहां पे बड़ा वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इज प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा। इज दैट क्लियर? चलो बड़ा, हियर विल स्टॉप एंड रिमेनिंग पार्ट बड़ा विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज जो मैंने पढ़ा है बड़ा सब लोग रिवाइज कर लेना सब। बाय ऑल ऑफ यू बड़ा, टेक